Good morning, friends. Today we will study review of Laplace transform. Now, any time domain function f of t can be represented in its equivalent Laplace domain form, that is fs. This form is actually in frequency domain. Okay, and mathematically, the expression for this Laplace domain, Laplace transform, is that you have to represent it like this: Laplace transform of f of t is equals to f of s, and this will be equal to minus infinity to infinity f of t e raised to power minus st dt. Okay, and this is actually double sided Laplace transform. So in control system we use only single sided Laplace transform. Okay, that is Laplace transform of f of t is equals to zero to infinity integration of f of t e raised to power minus st dt, and this formula will be used throughout our control system subject. Now you have already studied this Laplace transform, so we don't go very deep in this Laplace transform and in its inverse. However, you must aware and know about everything about this Laplace transform. So just take a review of few signals having Laplace transform of few signals. Okay, function here, and here it's Laplace transform. Okay, the very first function, and it is very important here also, that is delta t, that is also known as impulse function. The Laplace transform of impulse function is actually 1. Second thing is that is unit step function. Unit step function, that is denoted in time in terms of ft, is actually u of t, and unit step function has its Laplace transform as 1 by s. Okay. Third is delayed unit step function, that is u of t minus t. This is 1 by s e raised to power minus st. Okay, next is your ramp function. Ramp function is actually denoted by
t. That is, it looks like this one, like if this is a ramp function. Okay, so in this case its Laplace transform is 1 by s square. Fifth is, that is, Laplace transform of t raised to power n, and this is nothing but n factorial divided by s raised to power n s n plus 1. Now again continue. The Laplace transform of e raised to power alpha t. If we write here plus minus, then we can say that both the values are included. Plus minus alpha t, then its Laplace transform will be equal to 1 by s minus plus alpha, because you can write this function as 1 into e raised to power plus minus alpha t. Okay. Seventh is t e raised to power minus अल्फा t. इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है आपके पास, that is 1 by s plus alpha square, because आपके पास जो t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है वो होता है 1 by s, और आपका जब भी आपके पास e raised to power minus alpha t आप इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको यहाँ पर s plus अल्फा से रिप्लेस कर देंगे. ओके, तो यही होता है इसमें आपके पास फंक्शन. सॉरी, ये जो मैंने आपको बताया था इसमें आपके पास जो t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है 1 by s square होता है. ओके, नाउ similarly we can have sine of omega t. This is very important for this control system subject, and its Laplace transform is, that is, omega divided by s square plus omega square. And the ninth one is cos of omega t cos of omega t का जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है वो होता है ओमेगा बाय s divided by s square plus omega square. ओके, सिमिलरली आपके पास अगर आपके पास ये फंक्शन e रेज टू पावर माइनस अल्फा टी इसमें मल्टीप्लाई करता हूँ साइन के साथ, तो इसका जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म बनता है, आप कुछ नहीं करना है, इसमें आपको इस वाले टर्म्स में s की जगह पर s प्लस अल्फा रखना है. तो ओमेगा डिवाइडेड बाय s प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, दिस विल बी द लाप्लास ट्रांसफॉर्म. ओके, नाउ आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो आपके पास डिफरेंशिएशन है उसके लिए लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, इंटीग्रेशन है उसके लिए लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है. दैट इज, अगर आपको फाइंड आउट करना है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ d by dt of ft, then its Laplace transform will be represented by s fs minus f of 0 plus. f of 0 plus का मतलब होता है कि आपकी इसकी वैल्यू जस्ट आफ्टर द टाइम t is equals to 0, जस्ट आफ्टर यानी वेरी स्मॉल. यू कैन टेक इट एज एट s is equals to 0 पर भी आप ले सकते हो.
सिमिलरली आपके पास लाप्लास ट्रांसफॉर्म, अगर आप सेकंड डेरिवेटिव का निकालना चाह रहे हैं तो आपके पास आएगा एस स्क्वायर एफ एस माइनस एस जीरो प्लस माइनस एफ डैश दैट इज फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ एफ एस, और फिर उसमें आप वैल्यू रखेंगे 0 एंड सो ऑन। इसी तरीके से आपके पास बढ़ता चला जाएगा। वेर एज अगर ये बात हो गई डिफरेंशिएशन की, तो आपके पास ठीक है, इंटीग्रेशन में आप क्या करते हैं, डिवाइड में हो जाता है। ओके, तो इन केस ऑफ इंटीग्रेशन अगर आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है, एफ एक इंटीग्रेशन फंक्शन है आपके पास उसका, तो आपका क्या आएगा वैल्यू, एफ ऑफ एस डिवाइडेड बाय एस प्लस एफ ऑफ एस का इनवर्स, दैट इज दिस इज नॉट द इनवर्स, दिस इज एक्चुअली इंटीग्रेशन। ओके, प्लस डिवाइडेड बाय एस, एंड ये जो वैल्यूज हैं आपको याद रखनी है। ठीक है, कि आपके पास इंटीग्रेशन में सपोज, क्योंकि जैसे आप लिखते हो एक आपने मान लिया एक ये सर्किट है आर और ये एल, और आप इसका इम्पिडेंस निकालना चाहते हो, दिस इज जेड एस निकालना चाहते हो, तो दिस इज योर आर, दिस इज एस एल। ओके, ये एस एल कहाँ से आया, क्योंकि आप इसको अगर टाइम डोमेन में लिखते हो तो जेड ऑफ टी टाइम डोमेन में क्या होता है, जेड ऑफ टी टाइम डोमेन में होता है आर प्लस, सॉरी, अगर इसमें आप केवीएल लगाएं, आपको केवीएल लगानी पड़ेगी इसमें, तो अगर आप इसकी केवीएल लगाएं यहाँ पर वी ऑफ टी निकालें, ये आपके पास करंट मान लेते हैं, ये आई ऑफ टी है, तो आपके पास वी ऑफ टी इज इक्वल टू आई ऑफ टी इंटू आर प्लस डी बाई डी टी ऑफ आई टी इंटू एल। तो ये आपके पास फॉर्मूला होता है, तो आप इसकी हेल्प से निकाल सकते हैं इसका वैल्यू। तो ये आपके पास, अगर आपका इसका ट्रांसफॉर्म लाप्लास ट्रांसफॉर्म डोमेन में निकालेंगे तो आपके पास जेड एस की वैल्यू जो आ जाती है दैट इज वी एस डिवाइडेड बाय आई एस, क्योंकि आपने इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालेंगे। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आपको निकालनी है अलग से, तो आप यहाँ पे वी एस निकालेंगे, तो वी एस आपके पास आ जाएगा आई ऑफ एस इंटू आर प्लस एस एल, बिकॉज यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन है एल इसका, ये हो जाएगा आपके पास आई, सॉरी यहाँ पर ये आई आना चाहिए था मल्टीप्लाई में बाहर, ये मिस्टेक है हमारे पास, ये मिस्टेक है। ठीक, तो आप इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, ये आपके पास वैल्यू आएगी आर आई टी प्लस एल टी बाई टी टी ऑफ आई टी, ऐसे लिखेंगे। ओके, तो आपके पास ये जो वैल्यू है ये कन्वर्ट होकर कुछ इस टाइप से आ जाएगी। सो फ्रॉम दिस साइड you can find out its value, that is zs will be equals to r plus sl। अब देखिए कितना मुश्किल हुआ है, आपके पास टाइम डोमेन की इक्वेशन पता होनी चाहिए आपको, तब जाके आप उसका लाप्लास डोमेन निकालें। तो y should not be write its Laplace transform value at this circuit itself। तो ये जो सर्किट था यहीं पे आप इसके लाप्लास ट्रांसफॉर्म की वैल्यू लिख दीजिए, दैट इज एस एल में कन्वर्ट कर दीजिए, जो सर्किट आपका हो गया वो
लाप्लास डोमेन में कन्वर्ट हो गया, और आप इसका इम्पीडेंस बिल्कुल सीधे से निकाल सकते हैं, बिकॉज दिस आर एंड एस एल इज इन सीरीज। तो जेड एस क्या हो जाएगा आपके पास, आर प्लस एस एल। ओके, दिस विल बी सेम एज योर अबव वैल्यू। ओके, दिस इज ए रिव्यू, आपका लाप्लास ट्रांसफॉर्म का रिव्यू हो गया है। तो आप अब हम देखते हैं इसमें एक छोटा सा न्यूमेरिकल करके देख लेते हैं कि आपको अगर लाप्लास ट्रांसफॉर्म दिया हुआ हो और आपको इनवर्स निकालना हो, ठीक है, तो इनवर्स के लिए आप इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म यूज करेंगे। इसमें आपको जनरली यू मस्ट अवेयर अबाउट द टर्म दैट इज पार्शियल फ्रैक्शन, आपको आना चाहिए। ओके, just please, it's your homework, go to the background and go to background of partial fraction. Okay, just study it, go through it. Now take an example. Suppose आपके पास ये फंक्शन है एफ एस, और ये एफ एस की वैल्यू है आपके पास एस स्क्वायर प्लस, आई एम टेकिंग सॉल्व एग्जांपल here so that there should be no mistake at the time of doing it. तो ये आपके पास एस प्लस टू क्यूब हो गया, ठीक है। So we can write this function as k1 by s plus 2 plus k2 by s plus 3, sorry, s plus 2 whole square plus k3 by s plus 2 whole cube. Okay, now the coefficients आप निकालेंगे इसके, तो coefficients में आपके पास k1 की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 1, k2 की वैल्यू आ जाएगी -2, k3 की वैल्यू आ जाएगी -3, ठीक है। तो उसके बाद आपके पास जब आप इस वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पर ये फंक्शन बन जाएगा आपके पास एफ एस 1/s+2 -2 डिवाइडेड बाय s+2 होल स्क्वायर प्लस 3 डिवाइडेड बाय s+3 होल क्यूब। और इसका आप लाप्लास इनवर्स निकालेंगे, तो लाप्लास इनवर्स के लिए आपको L-1 लिखना होता है, L⁻⁻1 ऑफ एफ एस, ठीक है। तो ये वैल्यू आपकी, क्योंकि ये आपका है फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन है, तो इसको आपको 1 मान के चल सकते हो या यूटी मान के चल सकते हो, बिकॉज यूटी इज ऑल्सो यूनिट स्टेप फंक्शन 1 है। तो ये वैल्यू आपके पास आ गई e⁻²t, फिर ये आपके पास आ गया -2 इंटू e⁻²t, फिर सॉरी मल्टीप्लाई में t आएगा, क्योंकि t का जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है वो 1/s² होता है, प्लस 3/2 t², ठीक है, क्योंकि आपके पास लाप्लास ट्रांसफॉर्म t⁻n का निकालना पड़ेगा आपको इसमें, और ये आपके पास वैल्यू हो गई -2t मल्टीप्लाई में, दिस विल बी योर आंसर। Okay, so in this way we have to solve the numericals and different functions. However, we will continue with this topic and some more examples in another lecture with the continuity of your topic. Okay, thank you for watching this video.